200 SSC start. LVM3 पंचम पीढ़ी का प्रमोचक रॉकेट है। यह भीम का रॉकेट पिछले सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार लगभग 640 टन का होता है। यह 3 चरणों वाला प्रमोचक रॉकेट जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकाली अंतरण कक्षा में ले जाने की है अथवा 8 टन के नितभार को निम्न भू कक्षा में स्थापित करने की है। इस यान के प्रथम चरण में 200 टन वाले ठोस नोदक S200 स्ट्रेप-ऑन बूस्टर कोर के में लगे L110 चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित है उसके साथ संलग्न रहते हैं और ऊपर के चरण में 27 टन के क्रायोजेनिक ईंधन पर आधारित C20 इंजन वाला C25 चरण होता है। The maiden launch of the rocket had carried non-operational cryo stage and experimental payload crew module atmospheric re-entry experiment or CARE. Thereafter, the developmental launches designated as D1 and D2 had carried GSAT class of communication satellites. The first operational launch M1 had Chandrayaan-2 as its payload on 22nd of July 2019. We are about 2 minutes 10 seconds from the launch. Minus 2 minutes. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 36 उपग्रहों को जिनका कुल नितभार 5834 केजी है 601 किलोमीटर की वृत्ताकार निम्न भू कक्षा में 87.4 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित करना है। यह सभी पूर्णतः परीक्षित होकर इस यान में सुरक्षित अपनी कक्षा के लिए सफर करते हुए 4-4 के समूह में 9 बार में अपनी कक्षा में अंतःक्षेपित किए जाएंगे। यह पूरा घटनाक्रम लगभग 4500 सेकंड का होगा। Minus 1 minute. LVM3 being a gigantic rocket, the ignition of twin S200 boosters generates enormous acoustics at the time of liftoff that have the potential to damage the electronics in launch vehicle. As a part of acoustic suppression system, huge quantities of water is injected onto the launch pedestal to provide denser medium of water droplets to attenuate the liftoff acoustics. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. अब हम 20 सेकंड की दूरी पर प्रमोशन से सर्वप्रथम 2 S200 स्ट्रेप-ऑन बूस्टर का प्रज्वलन होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. P3 tracking. P1 tracking. Off normal. भव्य उत्थापन LVM3 OneWeb India-1 मिशन का Normal liftoff and an enchantingly beautiful sight of the twin S200 boosters burning, saluted against the night sky. मध्य रात्रि को आकाश को रोशन करता हुआ S200 बूस्टर्स Performance normal. यहाँ हम इसके कंपन महसूस कर रहे हैं। Searing the night sky, the LVM3-M2 mission moves forward. 25 meters long S200 boosters, each carrying 205 tons of HTPV-based propellant. Plus 1 minute. Action time 126.6 seconds.
They develop a peak thrust of 5,952 kilonewtons in vacuum. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। First stage performance normal. इसका प्रज्वलन काल करीब 130 सेकंड का होगा। S200 के प्रज्वलन काल समाप्त होने से पहले ही L110 जो कि तरल नरोधक पर आधारित चरण है, द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 stage ignited. Now we have a confirmation about the ignition of the core L110 stage. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी घोषणा की, तरल नोदक L110 200 stages are separated. और S200 स्टेज के बूस्टर्स पृथक कर दिए गए हैं। The twin S200 boosters have been separated from the ongoing launch vehicle. L110 core stage currently thrusting. L110 stage performance normal. This is powered by the Earth storable propellants UH-25 as fuel and N2O4 as oxidizer. The twin Vikas engine powered L110 stage has a nominal burn duration of 200 seconds. Payload fairing separated. ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। Loop guidance initiated. अभियान Plus 3 minutes. 127 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है और अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Having crossed the dense atmosphere, the payload fairings have been separated and the rocket is currently moving forward in closed loop guidance. L110 currently thrusting. L110 स्टेज में लगभग 110 टन के UH-25 तथा N2O4 ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनकी मदद से यह चरण 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है तथा इसका प्रज्वलन काल 200 सेकंड का होगा। The L110 carries the rocket to 282.4 kilometers altitude. SHAR, Trivandrum and Bangalore ground stations are currently acquiring the trajectory data. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य। प्रज्वलन काल के पूर्ण होने तक यह यान को करीब 2082 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान कर देगा और 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्रदान करेगा। Developing a vacuum thrust of 1598 kilonewtons. This stage empties the entire propellant of 110 tons in 200 seconds, that is close to 550 kg in a second. Plus 5 minutes. अगला चरण क्रायो चरण है। And shut off and separated. L110 चरण को पृथक कर C25 जो कि तृतीय चरण है उसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वह सामान्य निष्पादन कर रहा है। As announced by the Range Operations Director, we now have the confirmation of the successful ignition of the C25 cryogenic stage. Currently the altitude is 333 kilometers. तृतीय व अंतिम चरण LVM3 का क्रायोजेनिक ईंधन पर आधारित चरण है जो कि LH2 और LOX को ईंधन की तरह उपयोग में लाता है। यह एक जटिल इंजन है C20। इस चरण को C25 चरण कहा जाता है
क्योंकि इसमें लगभग 25 टन का क्रायोजेनिक ईंधन होता है। इस चरण का प्रज्वलन L110 चरण के बंद हो जाने के तुरंत बाद कर दिया जाता है। इस चरण में लगभग 650 सेकंड तक प्रज्वलित कर 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न किया जाता है, जिससे अंतिम चरण है जो उपग्रहों को उनकी अंतःक्षेपण की कक्षीय स्थितियां प्रदान करता है। The cryogenic upper stage of LVM3, called the C-25, carries 27 tons of propellant, liquid hydrogen as fuel, and liquid oxygen as oxidizer. The advantage of using cryogenic stages is their remarkably high specific impulse. For the C-25 stage, it is 4,344.3 Newton second per kg. The total thrust generated is 180 kilonewtons. During the 640 seconds of its operation, there is overlapping visibility from SHAR, Trivandrum, Bangalore tracking stations. यान के सभी स्वास्थ्य जानकारियां हमें भू स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस की मदद से यहां प्राप्त होती हैं। इस मिशन के लिए शार, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, शिपबॉर्न ट्रैकिंग स्टेशन, अंटार्कटिका, स्वालबर्ड तथा लखनऊ स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस हमें सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इस समय शार, बेंगलोर तथा त्रिवेंद्रम स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस हमें इस यान की पूरी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। अब हम उत्थापन से 480 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। यान की ऊंचाई 500 किलोमीटर, सापेक्ष गति 3.7 किलोमीटर प्रति सेकंड। View from the VIP gallery, where you can see former chairman of the ISRO. More than 19 minutes into the flight, the orbital conditions for the injection of satellites will be achieved. On your screens now, founder and chairman of Bharti Enterprises, Shri Sunil Mittal. Plus 9 minutes. Now a few words about the OneWeb Gen 1 satellites. OneWeb is a global communications network powered from space, enabling connectivity for governments, businesses and communities. It is implementing a constellation of low Earth orbit satellites. India's Bharti Enterprises serves as a major investor and stakeholder in OneWeb. This is OneWeb's 14th launch and the first with ISRO and NSIL. OneWeb satellites are arranged in 12 orbital planes with 49 satellites in each plane in circular orbit. The constellation will have a total of 648 satellites. Each satellite of OneWeb Gen 1 weighs 150 kg. Plus 10 minutes. C-25 तृतीय चरण LVM3 का सामान्य निष्पादन करता हुआ और यान पूर्वानुमानित पथ को अनुसरण करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। वरिष्ठ वैज्ञानिक, चेयरमैन ISRO, अब करीब 200 सेकंड की दूरी पर हम कक्षा की स्थितियां प्राप्त करते ही उपग्रहों को उनकी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेंगे। Cryo stage performance normal.
The pole-to-pole Plus 11 connectivity of this satellite constellation combined with the ground segment ensures better look angles for the signal strength. Unless the conventional geostationary satellites where the signal strength diminishes at high latitude regions. As OneWeb slogan says it all, creating universal connections. OneWeb इन उपग्रहों को जन 1 सैटेलाइट्स का नाम दिया है। OneWeb एक वैश्विक संचार नेटवर्क है जो कि अंतरिक्ष में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। इस संचार तंत्र से संचार नेटवर्क को सरकार, व्यापार तथा बृहत समुदाय को संचार सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसे कार्यान्वित करने के लिए OneWeb के द्वारा एक नक्षत्र मंडल तैयार किया जा रहा है जिसे हम सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के नाम से जानते हैं। भारत के भारतीय उद्यम OneWeb के मुख्य शेयर होल्डर हैं। यह OneWeb का 14वां लॉन्च है। इसके साथ ही इसरो और NSIL अंतरिक्ष के वैश्विक बाजार में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। OneWeb को इस नक्षत्र को पूरा करने के लिए कुल 648 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है। अब हम उड़ान से 750 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। यान की ऊंचाई 612 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ और उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर। As we told you earlier, a set of 4 satellites will be injected in 605.8 kilometers altitude at 19 minutes 45 seconds into the launch. Cryo stage performance normal. जैसा कि अभी हमने बताया, यह चरण 650 सेकंड तक प्रज्वलित होगा। इसी अंतिम चरण के प्रज्वलन काल में प्रथम समूह के उपग्रहों को उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तत्पश्चात क्रमानुसार उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर अन्य समूहों को उनके कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। प्रथम 4 उपग्रहों के समूह की उद्दिष्ट कक्षा 602.3 किलोमीटर की ऊंचाई तथा सापेक्ष गति 7.54 किलोमीटर प्रति सेकंड निर्धारित है। We are about 900 seconds into the launch. The current altitude is 602.8 kilometers and a relative velocity close to 7 kilometers per second. वर्तमान में शिपबॉर्न टर्मिनल के द्वारा हमें इस ट्रैक के डेटा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब कुछ ही क्षणों में उपग्रह की अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी। Cryo stage thrust cutoff. रेंज ऑपरेशन निदेशक की अभी घोषणा हुई। तृतीय चरण को बंद कर दिया गया है।
अब यह प्राप्त वेग को जारी रखते हुए plus 16 minutes. कक्षा की स्थितियां प्राप्त करेगा। After the first batch of satellite injection, a second set of 4 satellites will be separated 30 seconds later at almost the same altitude with almost same relative velocity. The third separation event in the satellite injection is scheduled 800 seconds later, that is to say 33 minutes 35 seconds into the flight. Fourth separation occurs 30 seconds later. The third and fourth batch of satellites are injected into 619 kilometers orbit after the cryogenic stage reorients itself appropriately. Until this time, the shipborne tracking terminal and Antarctica ground stations would have completed their range of tracking and the rocket would have gone to the other side of Earth. Next 5 batches will be separated in predetermined timeline like this. 5th batch at 47 minutes 26 seconds into flight, 6th batch at 48 minutes into flight, 7th batch at 61 minutes 16 seconds into flight, 8th batch at 61 minutes 46 seconds into flight, and finally the 9th batch Conditions are achieved. at 75 minutes 6 seconds into the flight. Present. प्रथम समूह के अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं और कुछ ही क्षणों में प्रथम 4 उपग्रह जिनका नाम है 1K, 3K, 5K तथा 7K 15 minutes. अंतःक्षेपित किए जाएंगे। The cryogenic stage is reorienting itself for the first batch of satellite separation. आप यह एनिमेशन देख पा रहे हैं C-25 जो कि तृतीय चरण है LVM-3 का, उसे बंद कर दिया गया है तथा थ्रस्टर्स की मदद से इसे उचित अभिवृत्ति प्रदान की जा रही है। The names of the first batch of satellites are 1K, 3K, 5K and 7K, whose injection we are eagerly awaiting. Satellites are separated. प्रथम समूह को सफलतापूर्वक अंतःक्षेपित कर दिया गया है। प्रथम 4 1K, 3K, 5K तथा 7K उपग्रह पृथक हो चुके हैं। Plus 20 minutes. We have the confirmation from the Range Operations Director that the first batch of 4 satellites, namely 1K, 3K, 5K and 7K, have been successfully separated. 2A, 4A, 6A, 8A satellites are separated. And the second batch also have been successfully separated. Their names are 2A, 4A, 6A and 8A. जी हाँ, द्वितीय समूह 2A, 4A, 6A तथा 8A उपग्रहों को भी सफलतापूर्वक अंतःक्षेपित कर दिया गया है। इसके पश्चात C-25 तृतीय चरण LVM-3 पुनः अभिवृत्ति निश्चित करेगा
और अगले 800 सेकंड के पश्चात अगले 4 उपग्रहों के समूहों को अंतक्षेपित करेगा। Cryostage reorienting itself again for the separation event of the next batch of satellites. The third batch of satellites will be injected into 619 kilometers orbit. The scheduled time of separation is 33 minutes 37.5 seconds into the flight. तृतीय चरण फिर से अभिवृद्धि नियंत्रित करता हुआ अब हम उड़ान से 1344 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। यान की ऊंचाई 608 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.538 किलोमीटर प्रति सेकंड है। As we await the next separation event for the satellites, let me intimate the viewers that after the separation of third and fourth batches of satellites, the visibility of the launch vehicle is available to the Svalbard tracking station only after another 350 seconds, that is 81 minutes into the flight. It is then that the confirmation of satellite separation is received at the Mission Control Center. The live transmission will be halted while the rocket is out of the tracking range and resume at appropriate time. इस मिशन का कार्यकाल करीब 4500 सेकंड का है। इस दौरान हमें शिपबॉर्न टर्मिनल की मदद से सभी आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं। The LVM3 OneWeb India-1 mission is about to set several firsts, like it's being the first commercial mission of LVM3 with NSIL. First time ever LVM3 is carrying multiple satellites and injecting them in the low Earth orbit. This is the largest ever an Indian rocket is carrying, that is the 6 tons of payload. This gigantic launch vehicle of ISRO, LVM3, is carrying 6 tons for this mission, which is the aggregate mass of the 36 OneWeb satellites and the satellite dispenser. Speaking about the association, this is the first time that OneWeb has collaborated with New Space India Limited, Department of Space. आइए इस दौरान आपको OneWeb के बारे में जानकारी देते हैं। OneWeb का ऐतिहासिक लॉन्च कार्यक्रम जारी है। इस मिशन को OneWeb ने लॉन्च 14 का नाम दिया है। लॉन्च 14 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा जा रहा है। इसमें 36 उपग्रहों के समूह को प्रमोचित कर दुनिया का पहला पृथ्वी की निचली कक्षा का नक्षत्र मंडल तैयार किया जा रहा है और यह नक्षत्र 2023 तक हाई स्पीड लो लेटेंसी की संचार सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा। OneWeb ने
इस प्रक्षेपण के लिए अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा NSIL के साथ भागीदारी की। इस मिशन में कुल 36 उपग्रहों के समूह के साथ OneWeb की कुल उपग्रहों की संख्या 464 हो जाएगी। 2023 तक यह नक्षत्र मंडल पूरा करने के उद्देश्य से OneWeb इस मिशन में कार्यरत है। OneWeb आम जनता के लिए संचार सुविधाएं प्रदान कर सामर्थ्य, गति, विश्वसनीयता तथा डिजिटल साक्षरता के आधार पर विभाजित समाज को जोड़ने की एक मुहिम चला रहा है। सूचना तक दुनिया की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए OneWeb का एक मजबूत सामाजिक उद्देश्य है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, यह मिशन कुल 4500 सेकंड का मिशन है, लेकिन उत्थापन से 2200 सेकंड तक यह यान और उपग्रह प्रमोशन को हमारे भू स्टेशन ट्रैक कर सकेंगे। उसके बाद यान अपनी यात्रा जारी रखेगा, लेकिन हमारे ट्रैकिंग क्षेत्र से बाहर चला जाएगा और पुनः संचार स्थापित होने तक हम स्टैंड बाय कंडीशन में रहेंगे। जैसे ही स्वालबर्ड स्थित ट्रैकिंग स्टेशन से संचार स्थापित हो जाएगा, हम बाकी के 20 उपग्रहों के अंतःक्षेपण की पुष्टि कर पाएंगे। प्रथम 16 उपग्रहों के प्रमोशन के पश्चात यह हमारे ट्रैकिंग क्षेत्र से बाहर होगा, इसलिए यह प्रसारण 40 मिनट बाद पुनः जारी किया जाएगा। This wait takes me back to the reminiscences of the previous launch of LVM3 carrying the Chandrayaan-2 as its payload. It was India's second mission to the moon. It had comprised a fully indigenous orbiter, lander Vikram and rover Pragyan. Enthusiasm was rife among the scientific fraternity and general public alike for the lander. The challenges for that mission were to carry a heavy payload and inject it precisely in a highly elliptical orbit so that the further orbit raising maneuvers for Chandrayaan-2 are economical from propellant budget point of view. Follow-on missions to bridge the gap of understanding the lunar ambience are on the anvil for ISRO. There are also several ways for the common public to associate with ISRO and its programs. Apart from watching the launch live on its social media portals and Doordarshan National, viewers can visit SDSC SHAR and its launch view gallery, which has a capacity to host 10,000 visitors simultaneously for the launch. ISRO undertakes several outreach activities as a part of World Space Week, which was held between 4th to 10th October. तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ पुनः अभिवृत्ति प्राप्त कर रहा है अगले 4 उपग्रह के समूह के प्रमोशन के लिए। अब हम उत्थापन से 30 मिनट 36 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। यान की ऊंचाई है 616 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.53 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगले 4 समूह के उपग्रहों का नाम 1A,
3A, 5A तथा 7A है, जिन्हें 619 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.53 की किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति के साथ अंतक्षेपित किया जाना है। तृतीय समूह के अंतक्षेपण के 30 सेकंड के पश्चात चतुर्थ समूह को भी अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। We are about 2 minutes away from the scheduled separation of the third batch of satellites, namely 1A, 3A, 5A and 7A. 30 seconds later, another batch of 4 satellites, namely 2B, 4B, 6B and 8B are scheduled to be separated. Cryo stage reorienting itself to prepare for the next separation event. यान पूरी तरह सामान्य। वर्तमान में हमें यह आंकड़े अंटार्कटिका स्थित भू स्टेशन से प्राप्त हो रहे हैं। Current altitude 617 kilometers. The relative velocity of 7.53 kilometers per second. अगले 8 उपग्रहों के अंतक्षेपण के पश्चात कुल 16 उपग्रह इस दौरान अंतक्षेपित कर दिए जाएंगे। उसके पश्चात यह यान अपनी यात्रा जारी रखेगा तथा पृथ्वी की दूसरी ओर चला जाएगा। उस दौरान वह हमारे ट्रैकिंग क्षेत्र से बाहर होगा। 1A, 3A, 5A, 7A are separated. अब यह भी घोषणा की गई कि अन्य समूह 1A, 3A, 5A तथा 7A सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिए गए हैं। अगली घटना में 2B, 4B, 6B तथा 8B नामक उपग्रहों को अंतक्षेपित किया जाना है। Satellites 2B, 4B, 6B, 8B are separated. Confirmation has been achieved about the separation of This is Range Operation Director. 16 satellites are separated till now. Mission is continuing. Remaining 20 satellites will separate as per timeline in the non-visibility period. This 20 satellite separation will be confirmed after Svalbard telemetry station acquisition. All stations involved in operations can continue in positions. Others can reassemble at 01:20 hours. Over to Mission Director. This is Mission Director. The vehicle has reached the orbit, and as it is declared, 16 satellites out of 36 satellites were successfully separated, and the mission is continuing. We will, as it is informed, we will assemble after the mission activities will continue, and we will assemble as declared. I am thanking everybody, those who have participated and those who are witnessing this. The operations will continue. Thank you. We will assemble back at 1:20 on 23rd of October 2022 so that the confirmation of the remaining separation events is achieved by that time. जी हाँ, मिशन जारी है। अगले 20 उपग्रहों का अंतक्षेपण किया जाना है और इनके अंतक्षेपण की पुष्टि
40 मिनट बाद की जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए। हम पुनः उपस्थित होंगे 40 मिनट बाद। Congratulations to LVM3 and the OneWeb team for this historic mission tonight. In fact, early morning of 23rd of this month. And happy Diwali to all of you. So we started the celebration already in Satish Dhawan Space Center with the second operational mission of LVM3. And the very first commercial mission of LVM3, we have accomplished the orbit very accurately. Now the rocket is in its intended orbit. 16 satellites out of the 36 OneWeb spacecrafts have been already injected. I want to tell you that this is a very slow process of separating the satellites one by one. In fact, it is in sets of 4 it will be separated, and it will take long time. So at this moment, let me tell you that 16 have been separated very safely as we expected, and the remaining 20 satellites will be separating when we are not able to see it from this place. The data will come little later, and the mission operations of observing this separation is continuing, and we will be confirming safe separation of the remaining 20 satellites after that process is completed. I am very hopeful that the remaining 20 satellites will also get separated as safely as that they did for the first of the 16. This mission is a historic mission primarily because this is the very second operational mission of LVM3 that has gone commercial, and this is an opportunity that LVM3 is able to do such a wonderful mission today, and this has been possible by the support of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, because he wanted LVM3 to come into the commercial market with the NSIL in the forefront to operationalize our launch vehicles for exploring the expanding commercial domain that is open in front of us. And congratulations to the entire launch vehicle team for grabbing that opportunity and making it ready today for this historic mission. And I also want to thank the OneWeb team for having confidence in us to host it on LVM3 for their completion of their fleets. And we are very hopeful that the next mission of LVM3 will do the same to place the remaining 36 satellites that it has been contracted with NSIL for the next launch of LVM3-M2 mission. Until then, thank you so much, and I take this opportunity to invite CMD NSIL and come over here and then speak to the public, and also to the mission director, Sri Bhaskar, to have his final say on the mission. Thank you. Good evening to everyone present here, and all the viewers who are seeing this beautiful and extremely remarkable mission that we have achieved today. First of all, I'd like to compliment the team ISRO for giving us such a commendable mission of LVM3 and the precise performance, and I would say the most complex mission management for the OneWeb mission. I'm extremely delighted to see the beautiful videos of OneWeb which we just witnessed now,
where we are seeing the satellites getting deployed in space almost at an altitude of around 600 kilometers. I am proud to say, I am really delighted and honored, GSLV has made the most remarkable entry into the commercial launch service market. Extremely thankful for OneWeb for having faith in us, in our launch and our, I would say, the most professional and technical capability of the team ISRO. I think though today's successful event is significant in many ways to all the three major stakeholders of this particular mission, New Space India Limited, Indian Space Research Organization, and also OneWeb India. And the first and foremost thing that comes to our mind is that with this mission, we have shown to the entire world how to contract and execute the mission in less than 3 to 4 months. I would really say, and this was made possible only because every one of us had the will to do such a mission in the record possible time which the customer was expecting. I'm extremely thankful. And the kind of synergy NSIL, ISRO and OneWeb has demonstrated through this mission is really, I would say, is remarkable and unbelievable. And today's OneWeb mission, I would say, is the beginning of many more business engagement that NSIL is going to do with OneWeb for further strengthening our relationship between the two organizations. And with the support of ISRO that NCL always has, I think we can achieve much more better successes and give much better things to the nation here back. So once again, thank you everyone. Thanks Team ISRO OneWeb for the beautiful successful mission, and I'm very sure the next 20 satellites we will hear in the next 30 to 40 minutes the kind of performance it's going to deliver to us. Thank you very much. Respected Chairman ISRO, Secretary DOS, all the dignitaries of ISRO, OneWeb team, NWEL, customers, center directors, associate directors, deputy directors, mission executives, all the participants, and the honorable VVIP dignitaries of OneWeb and ISRO. A very warm good morning to all of you. On behalf of my project team and the entire team ISRO, is very proud to submit this success to Team ISRO. This was a demand given to us by Chairman ISRO to execute this mission in a very short time of less than 3 months. Once the requirement is defined, the entire team ISRO rose to the occasion, worked with full vigor and systematically as is the wont of ISRO. The entire schedule was success-based and concurrent processing was followed. There was no room for slip, and everything has to be done right at the first time itself. Rigorous activities were complemented with rigorous reviews by both ISRO as well as academia, so that no stone was left unturned and there was no slip. Marathon meetings with our OneWeb customers and NCL and with volumes of data exchange was an immense process, and it was helping each other. We were very proud that we could deliver what the customers expected from us. Praise and thanks be to the Lord, we, the team ISRO, has done what was asked by
the management to our team. I submit this success, as our chairman told, as Diwali gift to all our team ISRO. As our chairman told, this is first LVM3 launch for international commercial satellite mission through NSIL to a low Earth orbit carrying about 6-ton payload, the highest launch from our great nation. On this happy occasion, I profusely thank the entire team ISRO, including the top executives, project executives Mr. Narayanan, Mrs. Asha Mary Matthew, the entire project team, all the review teams, all the NTT and the working teams, all the ISRO teams, and all the participating teams. I profusely again thank our NSIL for giving us this opportunity and having a very fruitful, positive and contributing discussions and interactions. It was so efficient, never we had any misunderstanding, and we had marathon meetings almost every day. And I also bring it to inform and thank the customers, our OneWeb, that we were very happy and very satisfied in interacting with you and sharing all mutual things. Until the end, we never had any difference of opinion and we never had any dissatisfaction. This I can honestly say, and we have met all the requirements what the customers have asked. Now, last but not the least, I am thanking the entire family of all the team ISRO members, those who have toiled and toiled for this mission. Thank you. So thank you once again, all of you. We are ending the transmission at this moment, but the mission continues. We are waiting for the confirmation of the remaining satellite separation, and all mission executives will occupy their position to observe that. And thank you once again for this wonderful mission, both to OneWeb as well as NSIL, for enabling us to do this tonight. Thank you so much.